Hi, myself Dr. Sompal Singh, MD Medicine, and आज अपन बात करेंगे GERD पर, that is Gastroesophageal Reflux Disease. Gastroesophageal Reflux Disease को कॉमनली एसिड रिफ्लक्स के नाम से भी जाना जाता है. जब कभी भी अपन कुछ खाते हैं और खाने के बाद में वो पेट से वापस इसोफेगस के अंदर आ जाए, that is called reflux disease, right? जब भी अपन खाना खाते हैं तो पहले खाना मुंह में जाता है, मुंह से वो फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से वो स्टमक में जाता है. फूड पाइप लगभग में 10 इंच के आसपास की एक लंबी सी पाइप है, ठीक है, जो कि मसल्स और टिश्यू की बनी हुई रहती है. फूड पाइप और स्टमक के जंक्शन पर देयर इज अ स्फिंक्टर दैट इज कॉल्ड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर. ये स्फिंक्टर स्टमक के कंटेंट को वापस से रिगर्जिटेट करके इसोफेगस में आने से बचाता है. जब कभी भी इस स्फिंक्टर की टोन या इस स्फिंक्टर की पावर कम हो जाती है, जिसके कारण से स्टमक का कंटेंट इसोफेगस में आए, तो दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स. बच्चों में ये कॉमनली वैसे ही मिल जाता है, उनके अंदर ये डिजीज नहीं है, बट एडल्ट्स में ये अक्सर ट्रबलसम हो जाता है. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? अगर सिम्टम्स की बात करें तो द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ इट is the heartburn. That is, patient feels retrosternal burning in the chest, right? और symptoms की बात करें तो chest pain हो सकता है, lump in neck feel हो सकता है, dysphagia हो सकता है, खाना खाने में दिक्कत हो सकती है, nausea, vomiting, ये other symptoms भी इसके साथ में associated हो सकते हैं. Okay? Now if we talk about how we will diagnose it, इसका diagnosis कैसे बनाएंगे? तो to make a diagnosis of GERD, the most common thing to make a diagnosis is clinically. Diagnosis of GERD is most commonly made with the clinically. ठीक है? In the gastroesophageal reflux disease, there is no specific test to make a diagnosis of GERD. But in certain cases, esophageal pH monitoring can be done, and which helps in the diagnosis of this GERD, right? Other thing, to rule out other issues related to the stomach or esophagus, you can go for upper GI endoscopy, which also helps to rule out like Barrett's esophagus or gastric ulcers, right? If you want to ask what are the risk factors for GERD, then the most common risk factor is lifestyle. In the today's scenario, we are having mostly sedentary lifestyle, which affects the GERD. Another thing is there are certain foods which causes GERD, like caffeine containing foods, alcohol, and spicy foods. Next, if we talk about pregnancy, also increases the risk of GERD. Fine. If we want to talk about the treatment of GERD, then it can be divided into the mild, moderate, and surgical treatment. In the mild cases, you can simply go for the lifestyle changes along with the H2 blockers. They will help in curing the symptoms. In moderate cases, we can start the PPI, that is proton pump inhibitors. There are the multiple proton pump inhibitors like pantoprazole, rabeprazole, esomeprazole, etc. Different proton pump inhibitors works in different populations. So if one proton pump inhibitor is not working, then you can switch to another proton pump inhibitor. If still the patient having symptoms, then you can increase the dose from one large dose to twice small doses of the PPIs. In certain cases where all the things are not occurring, not helping, and patients continue to have symptoms, we need to search for another diagnosis, and still the patient do not have any other diagnosis, then you can choose the surgical option, that is fundoplication. But this surgery is very rarely used and it is not so much useful. Fine.
So this is all about GERD. Thanks a lot. Thank you.